Good evening students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we will start with the new topic supply. ठीक अछि आज जे हमें demand elasticity of demand देखिथिलो एबे हमें देखिया supply. What do you mean by supply? Supply ର meaning कोन? Exactly जिंस कोन करिया again से supply करिया कि distribute करिया. तो supply ର major meaning होची distribute करिया. से कोन होची देखो difference between the stock of goods and supply of goods. दीटा जा भितरे किछि डिफरेंस अछि स्टॉक ऑफ गुड्स भितरे एंड सप्लाई ऑफ गुड्स भितरे किछि डिफरेंस अछि सप्लाई मींस sum of the part of stock of the goods which is prepared by a seller to sell at a particular price at a particular market and at a particular period of time तो से कोन कहउछि sum of the part of stock माने कोन whatever we have produced सेडा हमें तीनटा जिंस प्लान करियर अछि कोन कोन ना को प्राइस रे प्ले माने को प्राइस रे हमें बिकिबा को मार्केट रे हमें बिकिबा एंड को टाइम रे हमें बिकिबा तीनटा जिंस हमें प्लान करियर अछि कोन कोन ना को प्राइस रे बिकिबा को मार्केट रे बिकिबा एंड को टाइम रे एग्जैक्टली हमें बिकिबा से तीनटा जिंस हमें प्लान करियर अछि से सब जिंस को अंडर रे जाउछि को फैक्टर को धरि के होछि ना सप्लाई को धरि के होछि अल्टीमेटली सप्लाई रो मीनिंग होछि कोन जहां भी हम पाखरे स्टॉक ऑफ गुड्स अछि सेडा हमें केमति डिस्ट्रीब्यूट करबा इन ऑर्डर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट सेडा होछि सप्लाई रो मीनिंग तो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखिबा डिटरमिनेंट्स रो मीनिंग मु कोन कहथली ना ऑल दोस फैक्टर्स लेखो all those factors that positively or negatively impact supply जहाँ भी हमरो सप्लाई अछि सेडा जतलो को पॉजिटिवली किबा नेगेटिवली इंप्लाई माने इफेक्ट हबो सेडा को धरि हमें कोन करिया ना डिटरमिनेंट्स गुडा को एनालिसिस करि करि डिटरमिनेंट्स रा एक्चुअल मीनिंग होछि सेडा से जदी फेवरेबली और नेगेटिवली किछि भी जदी इंपैक्ट आनी पाछि ताको हमें कहया कोन डिटरमिनेंट्स से डिटरमिनेंट्स हम पढथिलो डिमांड रे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई हमें पढिबो ठीक अछि फर्स्ट डिटरमिनेंट अछि हमर कोन प्राइस ऑफ द गुड्स जहाँ किछि भी गुड्स हमर अछि तार प्राइस केते सेडा गोटे बहुत बड़ डिटरमाइनिंग फैक्टर तमो कोन लागुची कि सप्लाई केमिति इफेक्ट हबो प्राइस सहित केमिति इफेक्ट हबो अच्छा गोटे जिंस मन रखो डिमांड सब बळे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू रो पढथिलो सप्लाई रे सब बळे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू रो पढिबो तमे आजि पई कोन प्रोड्यूसर सब जदि तमे ना प्रोड्यूसर्स तमे प्राइस हाई थिला को अधिक बिकिया पे चेष्टा करियो ना प्राइस कम थिला को अधिक बिकिया चेष्टा करियो कम थिला ना अधिक थिला प्रोड्यूसर तमे तुम कौन दरकार अधिक प्रॉफिट दरकार फर्स्ट लेखा एडी प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू कम थिला को सामान अधिक बिक्री हबो एक्चुअली बट प्रोड्यूसर कौन चाहिए कि तार प्राइस जेतलो हाई थिबो सेतलो अधिक सामान बिकियो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू ठीक अछि सेति पे म कहूची हैला प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू रो सबले कौन हबो सप्लाई supply is always studied from the producer point of view the price of goods is the main determinant of supply producers supply more goods if the prices are high so price is directly proportional to what supply कौन पे ना जेहेतु ओडा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू रो तमे देखुछु कि सेलर पॉइंट ऑफ व्यू रो हमें देखुछु माने कोन प्राइस हाई थिला को आमे चेष्टा करियो कोन हम मार्केटिंग एक्टिविटीज पूरा हाई करी कि किमती कोन करी कि हमें अधिक गुड्स किंदी बिकी देबा producers supply more goods if prices are high they supply fewer goods if prices are low तो directly proportional माने कोन प्राइस टा हाई थिला को सप्लाई कोन थेबो हाई थेबो एंड प्राइस टा लो थिला को सप्लाई भी लो रहबो बुझि पालो सो प्राइस इज द मेन डिटरमिनेंट डिमांड रे हो सप्लाई रे हो प्राइस इज द मेन डिटरमिनेंट तापर अछि गोल्स ऑफ द फर्म्स
Firms may try to work on various goods. For example, profit maximization, sales maximization, employment maximization is obujago. If the objective is to maximize profit, then higher the profit from the sale of a commodity, the higher will be the quantity supplied by the firm and vice versa. Say कौन goals of the firm. Goals of the firm माने कौन? Firm माने होची मनर गुटे कंपनी. गुटे कंपनी रो तीनटा प्रोडक्ट्स अछि. गोटे हमर कोन प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3. प्रोडक्ट 1 कोन होची ना प्रॉफिट ओरिएंटेड. से प्रोडक्ट बनै छि कोन पे ना प्रॉफिट कमाया पे. कोइली प्रोडक्ट सेटा हे पारे हैला कोइली प्रोडक्ट हे पारे. आ गुटे प्रोडक्ट होची कोन ना हमें इन दियागा माने कोन बोनस आ एम्प्लॉय मानन को डिस्ट्रीब्यूट करिया पे गुटे प्रोडक्ट बनै छि. आ गुटे कोन पे बनै छि ना नॉन प्रॉफिट किछि प्रॉफिट इंटेंशन रे सेटा हमें बनै. फर्स्ट प्रोडक्ट जहाँ भी अच्छे हमें कंस्टेंट एग्जांपल रखु जो अगेन से कॉटन टी शर्ट. सेकंड प्रोडक्ट बोनस जहाँ भी अच्छी सेटा कोन गुटे क्लॉथ जहाँ भी अच्छी क्लॉथ पीस वगैरह दोचते तांको एम्प्लॉय मानन को पे. थर्ड टा कोन ना पुअर पीपल को जहाँ भी गुटे लाइक वुलन क्लॉथ्स गुडा को डिस्ट्रीब्यूट करूछंती. तो फर्स्ट जहाँ भी अच्छे मतलब प्रॉफिट इन में प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोडक्ट जहाँ भी अच्छी से प्रोडक्ट हमें अधिक बिकिया पे चेष्टा करिया ना कम बिकिया पे चेष्टा करिया. ऑब्वियसली अधिक कहीं प्रॉफिट ओरिएंटेड हेगी अच्छी हमको प्रॉफिट अधिक दरकार तो आम अधिक बिकिया पे चेष्टा करें. तो गोल ऑफ द फर्म को धरिकी आम सप्लाईटा केमती चेंज होची. सेकेंड रे हमर रहिला कोन ना एम्प्लॉय मानन को पे जहाँ भी बनउछ एम्प्लॉय मानन को पे कोन आमे कम जिंस देकी तांको खुशी करिया पे चेष्टा करिबा. तो सेटा किंदी कर पारा ना तांकर फेवरेट कलर पचरबा से कलर रा आमे कोन रे तांको क्लॉथ पीस टा गिफ्ट करिबा. गुट्टा क्लॉथ पीस रे तांके खुशी हे जिवे. तांको इच्छा नथिया 10टा कलर देले ले तांके सैटिस्फाई हेबेनी बट तांको माने पसंद हेतिबा गुटे कलर देले भी तांको लागियो कि हमें कस्टमाइज्ड भाबुचे पर्सनलाइज्ड भाबुचे हैला. तो हमें कम सप्लाई करिबा पे चेष्टा करिबा सेटा हमर गोल. थर्ड जिंस होची नॉट फॉर प्रॉफिट बिल्कुल भी प्रॉफिट पे नै इमिति आगा हमें नॉर्मली पुअर पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करिया पे देखुछु. तो से केस रे कोन हबो हमर जेतिकी कम हे पारी सेतिकी डिस्ट्रीब्यूट करिया पे चेष्टा कर. So these are the three things माने एग्जांपल को देके कहली फर्म नो गोल को धरि गिरी हमरो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना केमती चेंज होची सेटा में देखि. देन आसी हमरो देखो से कोन कहछि फर्म्स में ट्राई टू वर्क ऑन वेरियस गोल्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेल्स मैक्सिमाइजेशन सब किछि. जदि तार ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो से कोन कहया हायर द प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ कमोडिटी हायर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड. जहां किछि भी से क्वांटिटी सप्लाई करछि से चेष्टा करियो सेटा हायर क्वांटिटी सप्लाई करिबा पे. बुझी पालो. देन आछे हमरो इनपुट प्राइसेस माने कोन लेखो कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग cost of the raw material for producing the finished goods. जहाँ किछि भी तम पाखरे फिनिश्ड गुड्स अछि सेटा प्रोड्यूस करिया पे तमे जहाँ भी रॉ मटेरियल यूज करछो से रॉ मटेरियल रो प्राइस टा धरि गिरी तमरा सप्लाई फंक्शन ने केमती इफेक्ट हबो. द प्रोड्यूसर सप्लाई मोर व्हेन द इनपुट प्राइस इज लो. अच्छा से कोन कहउची ना हमरा रॉ मटेरियल जदी हमको कम रेट रे मिल जाउची. अगेन से कांस्टेंट एग्जांपल कोन कॉटन टी शर्ट आमे जेतळ को हमर बिजनेस टा चलची कॉटन जेतळ को रॉ मटेरियल हमर कम रेट रे हमको मिल जाउची. जदी कम रेट रे मिल जाउची आमे कोन ट्राई करिया ना अधिक से कॉटन टा किन देकी कोन सेतळ को अधिक सप्लाई कर देबा पे हां ना नहीं जेतो हमको रॉ मटेरियल कम रेट रे मिल जाउची. बट जदी रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत अधिक पड़ी अछि फिलहाल तो हमें कोन चेष्टा करिया ना एते अधिक सप्लाई करिया नी लिमिटेड सप्लाई करिबा माने कॉस्ट बढ़े की टिके माने जेति की दरकार सेति की सप्लाई करिया रैंडमली करिबानी काहेकि जेतो हमको कॉस्ट अधिक पड़ी अछि कार कॉस्ट ना रॉ मटेरियल कॉस्ट. तो एडी लेखो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल is inversely proportional to the supply function. ठीक अछि. तापरे देखो टेक्नोलॉजी फैक्टर तमरा जहा किछि भी अछि तमे कोन भाबुछ जदि तुमको अधिक टेक्नोलॉजी मिलछि माने एडवांस टेक्नोलॉजी मिलछि जेमति कि तुम प्रोडक्ट टा बहुत जल्दी तयारी हे जिवो माने गुटे फर्नीचर मनर तुम प्रोड्यूस करछो से फर्नीचर प्रोड्यूस करिया पे तमरो गुटे फर्नीचर पे यू आर टेकिंग 3 आवर्स
3 घंटा लागुला एबे हम गोटे नुआ मशीन ने आनु नुआ टेक्नोलॉजी एडॉप्ट हैला जा लगे कि सेटा 1.5 आवर्स रे ही जाउछ तो तुमको कोन लाउछ से अधिक सप्लाई करिया ना कम सप्लाई करिया ऑब्वियसली अधिक सप्लाई करिया बिकॉज़ जेते अधिक टेक्नोलॉजी ताको मिलेबो सेते अधिक करि परिबो तो टेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई टेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई सप्लाई फंक्शन को सेडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बुझी पालो क्लियर अच्छा टेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने कोन जेते इंप्रूव तमरो टेक्नोलॉजी सेते अधिक सप्लाई ऑफ द गुड्स हैला देन आछि हमर गवर्नमेंट पॉलिसी इन द सेंस कोन सब्सिडीज और डिस्काउंट जदि से कहिला तुमको जेते अधिक सप्लाई करले तुम सेते सब्सिडी मिलबो तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर माने एनकरेज ही जिवे ना नहीं अधिक सप्लाई करिया पई काहे कि तांको सब्सिडी मिलुची जेते अधिक प्रोडक्ट्स तांके सप्लाई करिवे सेते अधिक सब्सिडीज तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जहां भी अछि जदि जेते फेवरेबल अछि सेते अधिक से प्रोड्यूसर टा सप्लाई करबो हैला से कोन लिखछि देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ टैक्स एंड सब्सिडीज ऑन गुड्स ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन सप्लाई हायर टैक्सेस ऑन गुड्स देखो जदि टैक्स अधिक अछि discourage the producers and their supply will be less माने higher tax rates lower supply higher tax rates lower supply lower tax rates higher supply बुझी पालो ना नहीं जेते अधिक हमर टैक्स रेट्स सेते कम सप्लाई जेते कम हमर टैक्स रेट्स सेते अधिक सप्लाई जदि तू सप्लाई करथबो मतलब टैक्स रेट तोर अधिक पड़ी होथली कहले से कोन एनकरेज हे पारियो कि नाही से ऑब्वियसली डिस्करेज हे जिवो कि काहे कि मो अधिक प्रोड्यूस करी काहे कि अधिक टैक्स पेमेंट करी बुझी पाला डायरेक्टली ए जिंस से देखली तमको पॉइंटटा रिवाइज हे जिबार अछि क्लियर गोल्स ऑफ द फर्म रे तबे गुटे जिंस लिखि दे पारियो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड जेते अधिक मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड पे तमरा सप्लाई रा ऑब्वियसली अधिक हे जिवो क्लियर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस देखो if the producers expect an increase in the price of a commodity then they will supply less at the present price and hoard the stock in order to sell it at higher price in the near future market से कहउची कि फ्यूचर रे जदी तम स्टॉक तम पाखरे जहां भी मटेरियल अछि जहां भी गुड्स तम पाखरे अछि से गुड्स रो प्राइस टा फ्यूचर रे बॉडी बोले तुमको न्यूज़ टा आसिला तमे कोन चेष्टा करियो तमे भाबियो कि एबे टिके टिके आगा मु सप्लाई करबी बाकी सब मु प्रोड्यूस करके रखि देबी जेतळ को प्राइस बढ़िबो मु सेतळ सप्लाई करी इन भाबियो ना नहीं तो से सेडा होछ देखो if producers expect an increase in the price of a commodity जदी लिखो expected increase in future expected increase in future expected decrease in future इट ऑब्वियसली सप्लाई रा लेस हे जिवो इट ऑब्वियसली सप्लाई रा कोन हबो मोर हे जिवो बुझि पारलो ना नाही expected increase in future अछि expected decrease in future अछि तो सप्लाई लेस है सप्लाई मोर सेमती हे जिवो क्लियर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज अच्छा एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस रे कोन होची जदी मनर गोटे प्रोड्यूसर अछि हैला म अगेन कहउछ सुनो गोटे प्रोड्यूसर अछि से जानिला तार जहां भी रिसर्च अछि हैला एंटिसिपेशन ताको जणा पड़ला कोन ना से जहां भी प्रोडक्ट सेल करछ मानो फर्नीचर रो प्राइस ता कोन टिके इंक्रीज हबो 2-3 मंथ्स रे तार डिमांड ता बढ़ी पारिबो प्राइस ता इंक्रीज हबो तो ता पाखरे कोन सप्लाई बे लिमिटेड अछि से आउरी सप्लाई करि पारिबो तो सी कोन ना सेतळो को सी डिमांड ता मैच करिया पे सडनली ता पाखरे एते जा सप्लाई पळा आसियोनी तो से कोन करिया एबे टिके करके सप्लाई करिवो टिके जे तो सप्लाई करछि से कोन स्टोर करके रखिबो पर मोमर जेतळो प्राइस ता बढ़िबो सेतळो को मु अधिक सप्लाई करी कोइ कोन करिया एबे सप्लाई ता कम कर देबो माने एक्सपेक्टेड इंक्रीज जदि ताको जणा पडुची आगरे से कोन करे सप्लाई ता कम करके रखि देबो जदि ताको जणा पडची एक्सपेक्टेड डिक्रीज माने एबे जो प्राइस ता चलछि तार कमी जिवो तो से कोन करियो जल्दी मो स्टॉक ता सरै दी सप्लाई ता किनि अधिक कर दी चेष्टा करिया ना नै सेडागा से कहछ
Price of other commodities देखो, usually an increase in the price of other commodities makes the production of that commodity whose price has not risen relatively less attractive. We thus expect that the other things remaining the same, supply of one commodity falls, the price of other goods rises. तो एड़ा बहुत irrelevant point बहुत irrelevant point से गुटे जिनस कहूची कोन ना जो जिनस देखो increase in the price of other commodities, underline करो, increase in the price of other commodities makes the production of that commodity whose price has not risen relatively less attractive. माने कहूची जदि मनर गोटे प्रोडक्ट आमे सतरे जेन्युइनली भलो भाबरे कम रेट रे दोछ हैला, बट जदि तार रिलेटेड माने तार रिलेटेड प्रोडक्ट्स जहां भी अवेलेबल अछि ता प्राइस जदि अधिक अधिक रे से बिकुची आमे सतरे कम रे देले एटा कोन हमको एट्रैक्टिव लागियो कि नाही कम क्वालिटी वाला हिथिबो सेतिबे से कम रे दोछि एली कहियो तमे भलो हेगिरी ताको कम कॉस्ट चार्ज करले भी भलो जिंस पई से कहियो कोन जेतु क्वालिटी कम हेछि सेतिबे से कम रेट चार्ज करथियो तो एडा ऑटोमेटिकली लेस एट्रैक्टिव हे जिवो ना नाही तो से सेडा कहूछि. We thus expect that the other things remaining the same, the supply of one commodity falls, the price of other goods rises. बुझला कोन पई ना जदि supply of one commodity falls माने गुटे commodity जदि मनर कम माने हे माने कोन होछि सेडा supply टा fall हे होछि माने supply टा कमी जाउछि तो other commodity product रो price कोन हबो automatically rise हे जिवो. तो ए पॉइंट टा एते irrelevant हला क्रॉस भी करि परिबो. गुटे जिंस से कहूछि अल्टीमेटली बुझ दीडा प्रोडक्ट बिकुथिला कंपटीशन थिला सिंपली कहूछि देखो दीडा प्रोडक्ट रो कंपटीशन थिला गुटे प्रोडक्ट कोन हला अल्टीमेटली बंद हेला तो एडार प्राइस कोन हबो हाई हे जिवो से जति कहले सेति किनियो ना काहेंगे दीडा नै आउट ऑप्शन नै तो अल्टीमेटली से सेडा कहूछि हला. नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट देखो, since the market supply is the sum of the suppliers made by individual firms, hence the supply varies with the change in number of firms in the market. A decrease in number of firms reduces the supply. Obviously, जत्ते अधिक दुकान सेते अधिक सामान हमको मिल पारे गुटे स्टॉक रो हो आ जत्ते कम दुकान सेते कम सप्लाई मिलबो. तो लेखो number of firms is directly proportional to the supply. Number of firms is directly proportional to the supply. बुझी पालो. Natural factors देखो, supply of goods depends on favorable weather conditions. Please underline favorable weather conditions. Conditions like drought, flood, extreme weather, pests and diseases disturb the crop production of raw material supply. This will affect the supply of goods. से कोच देखो जदि मनरो बहुत बड़ नेचुरल कैलामिटी पड़ा आसिला सप्लाई कमी जिवो हैला नाइ वेदर बहुत अधिक सपोर्ट करला हार्वेस्ट बहुत भला हैला सप्लाई अधिक हो तो नेचुरल फैक्टर्स आर ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ठीक अछि बुझलो हमर 9 डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. एबे देखो लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई कोन बुझौ छी हम. इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप. व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल रिलेशनशिप? देखो combined relation. It explains the functional relationship between supply of a good and price of a good. गुटे गुड रो सप्लाई आउडे गुड रो प्राइस केमिति रिलेटेड हेगी अछि कॉम्बिनेशन रे तार रिलेशनशिप केमति अछि सेडा कोन बुझेबो ना लॉ ऑफ सप्लाई हमको बुझेबो. When all other things remaining constant आ बाकी जति की डिटरमिनेंट्स अछि से सब न कंसीडर करिए सब जिंस कांस्टेंट मानेगी. इफ द प्राइस राइजेस सप्लाई आल्सो राइजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस करेक्ट माने प्राइस इज directly proportional to supply. Price is directly proportional to supply. माने कौन प्राइस राइज हेले सप्लाई इंक्रीज हबो प्राइस डिक्रीज हेले सप्लाई डिक्रीज हबो. Clear? If the price falls, supply also falls. It means there is a direct or proportional relationship between price and supply. Ultimately पूरा लाइन रे एति गया का कोई चीज. Clear? एडा हैला हमर लॉ ऑफ सप्लाई. एबे हम जाने सप्लाई फंक्शन. लॉ ऑफ सप्लाई इज क्वाइट सिंपल. Supply function देखो, it explains the relationship between supply and factors that determine the supply. अच्छा तमे जदि relationship टा
डिटरमाइन करिवो हैला जदि खाली प्राइस एंड सप्लाई को देखिबो आउडे होची फैक्टर्स ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई को देखिए फैक्टर्स ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई को देखिए कौन हम प्राइस एंड सप्लाई को जदि देखु चली कहले सेडा बुझेबा हमरो लॉ ऑफ सप्लाई डायरेक्ट क्वेश्चन तमरा आसी परबो एडा सप्लाई फंक्शन बुझिलो प्राइस और सप्लाई डा बुझिबो हमरो लॉ ऑफ सप्लाई रु फैक्टर्स ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई रो रिलेशन डा बुझिबो सप्लाई फंक्शन डिमांड रो भी सेम हैला कंफ्यूज होबन देखो फैक्टर्स ऑफ सप्लाई से केमती इक्वेशन रे बुझेछि नै जाउ छै कोन हमरो फैक्टर्स ऑफ कौन फैक्टर्स अच्छे हमरो प्राइस हैला जो भी गुड्स हमें सप्लाई करछु से गुड्स रो प्राइस ऑफ इनपुट्स माने कोन रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी वेदर कंडीशंस गवर्नमेंट पॉलिसी क्लियर एटा होची सप्लाई फंक्शन ए सब जार कॉम्बिनेशन रे सप्लाई डा केमिति हबो सेडा हमर कोन कोडा रे जाना पडियो ना सप्लाई फंक्शन रे जाना पडियो आ डायरेक्टली प्राइस सहित सप्लाई केमिति इफेक्ट हबो सेडा हम जाना पडियो कोन रे लॉ ऑफ सप्लाई अगेन रिपीट करछि काहे गेले बहुत थोड़े क्वेश्चन आछि एबे देखो सप्लाई शेड्यूल डिमांड शेड्यूल रे कोन थिला ना केति की डिमांड गोटे इंडिविजुअल पर्सन करछि केति की डिमांड गोटे टोटल मार्केट करछि दीडा जरा कोन बाइफरकेशन हमको डिमांड शेड्यूल रे जाना पड़ता इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल सप्लाई शेड्यूल रे कोन हबो अगेन से इंडिविजुअल गोटे प्रोड्यूसर रो सप्लाई केते रहबो एंड टोटल मार्केट रे जति की भी एक्जिस्टिंग प्रोड्यूसर माने अछंदी सेमानंगर सप्लाई शेड्यूल टा केते सप्लाई ट्रेंड टा केमते अछि सेडा हमको मार्केट सप्लाई शेड्यूल रे जाना देखो various quantities of goods that are supplied at various levels of prices quantities of goods supplied with respect to different price levels quantities of goods supplied with respect to different price levels जहा किसी भी प्राइस लेवल्स हमर अछि ताकु धरि गिरी हमर कोन सप्लाई शेड्यूल डा माने क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाईडा केमति चेंज होछि माने सप्लायर हिसाब रे जदी प्रोड्यूसर किबा सप्लायर हिसाब रे हम देखछु 100 रुपीस थिला अलगु से जदी 10 प्रोडक्ट सप्लाई करबा को चाहछि 500 थिला अलगु से केते चाहे ऑब्वियसली 50 की ताडू अधिक से सप्लाई करिया पे चेष्टा करिया जदी सेडा 90 रुपीस हैला तो सेडा कमेया पे से चेष्टा करबो तो केते एग्जैक्टली द क्वांटिटी ऑफ गुड्स से सप्लाई करबा को चाहूची एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसेस जहा भी प्राइसेस अछि हमरो केते एग्जैक्टली से क्वांटिटी ऑफ गुड्स ता सप्लाई करिया पे चेष्टा करछ सेडा हमें सप्लाई शेड्यूल रे जान देखो दीडा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल it shows the various quantities of goods that are supplied by underline karo khali individual seller or producer बुझी पाला क्या supply curve देखो from the above supply schedule the supply curve can be drawn तो supply curve ता से generally इनती देखो जी market supply schedule देखो it shows the various quantities of goods that are supplied by various producers or sellers हैला बहुत प्रकार प्रोड्यूसर्स एंड बहुत प्रकार सेलर मानंगर जहा भी शेड्यूल्ड अछि माने सप्लाई बिहेवियर ता अछि सेडा हमें कोड रे जानिबा ना मार्केट सप्लाई शेड्यूल रे जानिबा when we add the supply of all sellers then the total supply or market supply can be obtained हैला जहा भी टोटल सप्लाई किबा मार्केट सप्लाई डा हमको कोथरे जाना पड़े ना market supply schedule रे जाना whether the individual supply curve or market supply curve slopes upward from left to right as there is a direct proportional relationship between price and supply please mark it important दीडा जा पॉइंट एथरे important कौन कहउछन से माने the slopes upward from left to right
slopes upward from left to right. Since price is directly proportional to what? Supply. Price is directly proportional to supply. Exceptions to law of supply देखो. Law of supply कौन कौचे हमको? Law of supply कौन थिला? Price is directly proportional to supply. माने price high थिला हम supply अधिक करिया चेष्टा करी, price कम थिले supply कम करिया चेष्टा करू. तो law of supply रे exceptions कौन? सेटा हम देखिया. Exceptions माने कौन? Exceptions माने होची law of supply डा को केस रे follow हो. First thing होची land or agricultural goods. Land or agricultural goods रे तमे price अधिक थिला बेलको सिधी supply अधिक करि परियो कि नाही. जेति कि हमर harvest आछि सेति आगा हम करि परिया. Harvest को धरि कि price टा fix हबो ना. जदि हमर टमाटर जहाँ भी production अछि, tomatoes रो production जदि अधिक अछि, then only हमें कोन product टा जदि चाहिले अलगा जगह को सेटा कोन ये export करि कि हमें price टा high करि परिबा. बट जदि प्राइस टा हाई अछि एडी कहि तो टमाटा संगे संगे तो प्रोड्यूस करि परियानी. तो लैंड और एग्रीकल्चरल गुड्स एटा गोटे एक्सेप्शनल केस टा. सेकंड होची कोन रेयर गुड्स. रेयर गुड्स माने कोन? रेयरली अवेलेबल गुड्स जहाँ भी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस उडा जहाँ भी अछि, पेट्रोल जहाँ भी अछि हैला. पेट्रोल केते किए कोन आनी परियोगी नाही. जेति कि तारा लिमिटेड अछि सेति कि आका आनी परियो. रेयर गुड्स इमदी बहुत किछि हमें कहि परियो. सप्लाई ऑफ लेबर. In case of labor, एडा underline करो, एडा तीन थोड़ा आस्ट. In case of labor, the supply curve is backward bending. Backward bending. Because in the initial stage, if the wage level is increased, the supply of labor is also increased. Beyond a certain stage, if the wages are increased, people will substitute lease for paid work time. So the supply of labor will be decreased. Ultimately से कौन कहूची जदि मनर स्टार्टिंग स्टेज रे तो समस्त मार्केट रो अधिक जदि दउछु तो वेज रेट टा लोकाना आसी पारन प्रेफर करि पारन. जदि तो ताड़ भी अधिक तो देई दोछ कि हो एनकरेजमेंट हिसाब रे हम देई दा तो लोक कोन करिए प्रेफर टू हैव लीजर टाइम. जेति कि से कामडा अछि सेडा जान जानि कोन करिए ताके डिले करिए ताकि ताके अधिक दिन आसी पारिए. बुझिला सेडा होछ लोकान बुद्धि आ हैला. एबे देखिया चेंज इन सप्लाई. ए जिनसडा बुझिलो रेयर गुड्स और सप्लाई ऑफ लेबर टा बुझिलो, एग्रीकल्चरल गुड्स टा बुझिलो. लॉ ऑफ सप्लाई रे कोन होछला प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई. प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई. बट सेथिरो तीनटा एक्सेप्शनल केस अछि. गोटे होछि एग्रीकल्चरल गुड्स, गोटे होछि रेयर गुड्स, गोटे होछि कोन हमरा सप्लाई ऑफ लेबर. सप्लाई ऑफ लेबर टा टिके इंपोर्टेंट मार्क करियो बिकॉज़ एडा रे तीनटा पॉइंट अछि हमरो सॉरी दीटा पॉइंट अछि. गोटे होछि सप्लाई कर्व रो शेप टा दैट्स ऑलवेज बैकवर्ड बेंडिंग. तार रीजन टा हैला. रीजन कोन ना इनिशियल स्टेज रे तमे वेज लेवल टा इंक्रीज करले पीपल विल प्रेफर टू हैव यू. बट व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग आफ्टर सम लेवल बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लोक कोन करिए ना स्पेंड टू हैव लीजर टाइम. ताके कोन करिए जान जान कि से प्रोडक्शन एक्टिविटी ना डिले करिवे जा लागि कोन ताके अधिक दिन आसी परिबे बिकॉज़ इट्स इंपोर्टेंट. मो अगेन रिपीट करले. एबे देखो चेंज इन सप्लाई. इट्स अ वेरी इजी कांसेप्ट. देखो change in supply when according to the change in determinants of supply leads to change in supply. These supply are of two types. Change in determinants of supply. Determinants of supply mu कहली कितने determinants अछि supply रो 9 7 कोडी 7 ना 9 अच्छा it's 9 ठीक अछि. supply रो determinants 9 अछि, demand रो 7 अछि. ओके आउ दिडा तमे ऐड करिया ले कर परियो. बुझिला डिटरमिनेंट्स आउ दिडा ऐड करिया कि गुटे होची गाड़ी अछि ना नहीं गुसेडा गुटे डिटरमिनेंट हे परियो. गाड़ी खेलले के जिबो प्रोड्यूस करियो नै मु कहूची हैला. आउ गुटे होची कोन मूड ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग. ताकि इच्छा थिले से केडिया नल नहीं आउ, इच्छा थिले से प्रोड्यूसर दे नल नहीं आउ. इन द डिटरमिनेंट्स कोइला हम केतरा हली कहि परिया बट टेक्स्ट बुक रे केतरा अछि नडा अछि हैला. चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. सप्लाई रे जहां भी डिटरमिनेंट्स अछि सेडा चेंज हेले जदी सप्लाई रे किछि चेंज ता आसुछि देन वी टेल इट एज एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज. फर्स्ट रे पढिया हमें एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन सप्लाई. when all other things remain constant, when all other things remaining constant, if there is a change in price that leads to change in supply, then these changes in supply are called as extension and contraction of supply. All other things remain constant. को जिनसला change होची ना change in price. Change in price leading to what? Change in supply. बुझी पाला?
प्राइस रे किछि चेंज होची जा द्वारा सप्लाई रे किछि चेंज होची बुझि पालो सेडा हम कोन कहया एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई when the price is increased the supply will be extended when the price is decreased the supply will be contracted कोन हबो ना प्राइस ता जदी इंक्रीज हैला सप्लाई कोन हेची supply is said to be what extended supply is extended supply is contracted हैला supply is extended and supply is contracted change in price leading to change in supply से price टा increase हेले supply extend हबो price टा decrease हेले supply contracted हबो हैला simple good statement रे रहला एडी ब्रैकेट रे देखो all other determinants remain constant all other determinants remain constant एडी कोन कांस्टेंट अछि हमरो प्राइस आ कोन चेंज होची चेंज इन any one of the determinants change in any one of the determinants leading to change in what supply change in supply then these changes are called increase or decrease of supply to explain the increase and decrease of supply single supply curve is enough when the supply is increased the new supply curve is formed towards the right of the old supply curve please underline towards the right of old supply curve हेडी कोन होची towards the left of the old supply हेले supply जदी कोन हबो increase हबो new supply curve is formed towards right to old supply curve और जो decrease हबो new supply curve is formed towards left to old supply curve देखो से किन करची S1 S2 अछि हैला राइट को जोड़ा हेच तोड़ा कोन ऑब्वियसली इंक्रीज हेच ना नहीं एटा कोन हमर इंक्रीज टा एटा कोन बुझी पाला क्लियर एडी एस कर्व काटी की सप्लाई कर्व लेके बेटा क्लियर elasticity of supply रा खाली इंट्रोडक्शन पार्ट टा देखो it's similar to elasticity of demand जदि भी elasticity of demand टा बुझना you can just get acquainted with this term
ES सहित जी जानि दबो लाइक कांसेप्ट टा ED भी आराम से बुझ जिवो तो it shows the ratio of proportionate change in supply and the proportionate change in price proportionate change in supply to proportionate change in price केते proportionate प्राइस रे चेंज हेले माने केते प्रपोर्शन ऑफ प्राइस रे चेंज हेले जायकी केते प्रपोर्शन ऑफ सप्लाई रे चेंज होबो सेटा हमें कोडा रे जानिबा ना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रे जान इट मींस इट एक्सप्लेन्स द रेस्पोंसिवनेस ऑफ सप्लाई टू द चेंज इन प्राइस माने प्राइस रे की चेंज हेले सप्लाई केमिति रेस्पोंड होची रेस्पोंसिवनेस टा केमिति अछि तार सेंसिटिविटी टा केमिति अछि सेटा हमें देखिया ईएस रे सेटा पे हमर 5 जिंस अछि 5 पार्ट्स अछि जनरली परफेक्टली पार्ट रे कोन आस्था होची हमरो ना गुटे थिंग पूरा कांस्टेंट रहयो गुटे थिंग पूरा चेंज हबो बट रिलेटिवली पार्ट रे कोन हबो दीडा से जिंस रे चेंजेस थिबो बट गुटे अधिक थिबो गुटे कम थिबो बट यूनिटरी रे कोन हबो एडार चेंज इज इक्वल टू एडार चेंज वेरी गुड ए दीडा रे चेंज तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इमिडिया देखो सेम जिंस अछि चार्ट टा मु पर नेक्स्ट क्लास रे काटिबी बट अंडरलाइन करो प्राइस इज कांस्टेंट चेंज इन सप्लाई प्राइस टा कांस्टेंट अछि सप्लाई टा चेंज होची सप्लाई टा चेंज होची एडी कोन होची प्राइस चेंज होची सप्लाई कांस्टेंट अछि सिंपल वर्ड्स रे मो इंट्रोडक्शन पार्ट को होची लेखो प्राइस कांस्टेंट अछि सप्लाई चेंज होची बट एडी प्राइस चेंज होची सप्लाई कांस्टेंट अछि एडी कोन होची change in supply is more than change in price change in supply is more than change in price एडी कौन होची ना change in supply is less than change in price आउ एडी change in supply is equal to change in price बुझी पालो एति आगा जिंस एडारा हम डिटेल चार्ट टा नेक्स्ट क्लास रे देखिबो फाइन थैंक यू।